Good morning, afternoon. Good afternoon, students. Let's start today's session with some energy. I hope you are all doing fine. And if you remember, where were we last time? We were here, right? So, we yesterday completed the first three parts, and today we are gonna do the last three parts, and after that we'll complete the chapter. So we'll today be doing half angle formula, Heron's formula, and Napier's analogy, and we'll also be looking at some questions. Got it? We'll also be looking at some questions. So without further ado, let's start the topic. What we are gonna do? Okay. So first we're gonna be studying half angle formula. My voice is, I hope it's pretty clear. If not, you can just tell me, and basically it's a mic check. So if it is clear, then we'll move forward. Okay, fine. Chalo. Let's start. So the half angle formula are obviously for three things, which was sine, cosine, tan. Cosec, sec, cot को वैसे भी हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि अगर वो आए तो we'll convert into sine, cosine, tan. So this is the different half angle formula, not the one we studied in the start. This is basically applications of sine cosine rule. Got it? So here we have sine a by 2 is under root of s minus c upon bc. Now अभी ये s क्या है? S क्या नई चीज आ गई? So s कुछ नहीं है. S is called semi perimeter. S is called semi perimeter, and which is equals to perimeter of a triangle क्या होता है? A plus B plus C. Semi perimeter मतलब आधा, तो divide by 2. So that means S is A plus B plus C divided by 2. That means I can write 2S as A plus B plus C. So तीन formula हमारे पास, sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2. Obviously these are for angle A. So suppose if you notice the pattern, sin A by 2 में S minus B, S minus C आता है. So अगर if someone asks me sin B by 2, sin B by 2 क्या होगा? B by 2 में क्या आएगा? S minus A into S minus C upon AC. Got it? Similarly sin C by 2 लिख सकते हैं. Cos A by 2. Cos A by 2 में क्या है? S minus A. So अगर मुझे cos B by 2 लिखना है, तो cos B by 2 क्या होगा? Cos B by 2, 1 second. Yeah. Cos B by 2 will be equal to under root of S into S minus B upon BC. I hope you are getting it. And tan A by 2. Tan A में कौन आता है? Denominator में S minus है, S minus B, S minus C. So similarly tan B by 2 क्या होगा? Tan B by 2 will be under root of S minus A into S minus C upon S into S minus B. We can also write tan B by 2, और अगर हम लोग भूल गए तो tan क्या होता है? Sin upon cos. So sin B by 2 upon cos B by 2. Got it? So sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2 clear है. So अभी से हम लोग जो yesterday हम लोग ने जो previous lecture में questions किए थे, यहाँ पे half angle आए थे. If you remember, let me show you. कहाँ पे आए थे वो हाफ एंगल वाले क्वेश्चंस? याद है क्या तुम लोग को? ये वाले C by 2 आया था, A by 2 आया था. तो what we did was, हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर दिया था by using this formula. अभी हम लोग के पास हाफ एंगल के फॉर्मूले, तो हम लोग को अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. We'll just use the half angle formula that we have. Got it? Okay. So कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे. So please again look at the formula again. Sin A by 2, S minus B, S minus C upon BC. So let's now look at some questions. So this is a question here.
ऑब्वियसली हम लोग वापिस स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन से एंड धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी बढ़ाएंगे. गॉट इट? सो इन ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशंस के कहने का मतलब होता है कि ए एंगल के अपोजिट वाली साइड इज स्मॉल है, बी एंगल के अपोजिट वाली साइड इज स्मॉल बी, सी एंगल के अपोजिट वाली साइड इज स्मॉल सी. इसका मतलब ए बी सी का लेंथ दिया और cos a by 2 पूछा है. मतलब दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. cos a by 2 का तो फॉर्मूला ही पता है ना मुझे. व्हाट इज cos a by 2? cos a by 2 इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a upon bc. Am I right? This one s minus a upon bc सबकी वैल्यू पता है, बट मुझे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी? s की. s क्या होता है? a प्लस b प्लस c अपॉन 2. सो यहाँ पे a कौन है? 10 प्लस 8 प्लस 6 अपॉन 2. सो आई गेस 14 प्लस 24 12 आ रहा है. राइट? कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है होने वाला है. सो अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 12 माइनस 10 अपॉन 8 इंटू 6. सो ये क्या गया? अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 2 अपॉन 8 6 48 आई गेस. सो 12 1 जा 12 4 जा 48, 2 1 जा और 2 2 जा. दिस इज वेरी सिंपल आ गया. ये क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2. तो दैट इज बेसिकली 1 अपॉन रूट 2. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? cos a by 2 की. तो cos a by 2 की वैल्यू which is option C. Simple. Got it? Now let's move on to next. Next is the Heron's formula. Heron's formula तुम लोग ने like you may have studied in NCERT 10th standard. क्या काम करने क्या यूज आता है उसका? That is used basically for finding area of triangle. तो इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Heron's formula is area of triangle ABC is under root of S into S minus A, S minus B, S minus C. So no need to like look at this. You will have already studied और वापिस आपने 11th में आके पढ़ लिया हो. So this is just a formula. So let's see the questions. Yeah. In triangle ABC, prove that sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2 is equals to area of triangle ABC का square upon ABCS. So अभी यहाँ पे A by 2, B by 2, C by 2 आ गया sin, which we know the formula. So we don't need to convert by using half angle. So obviously we'll start with LHS. LHS start करेंगे sin A by 2. What is sin A by 2? Formula याद है क्या? It was under root of S minus B into S minus C upon BC into what is sin B by 2? B by 2 was S minus A into S minus C upon AC. What is C by 2? Sin C by 2 is under root of S minus A into S minus B upon AB. Now if you see all the terms are getting squared. कहने का मतलब ये b देखो, b and b दो बार आ रहा है तो b स्क्वायर हो गया. सिमिलरली ऊपर s minus b दो बार आया, s minus b द होल स्क्वायर हो गया. एंड सेम सबके साथ हो रहा है, s minus c भी दो बार है, s minus a भी दो बार है. तो बेसिकली सब स्क्वायर 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 हो जाएंगे. एंड इफ ऑल देयर आर स्क्वायर 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 देन दे विल बी आउट ऑफ द स्क्वायर रूट. सो हम लोग को क्या मिलने वाला है? s minus a into s minus b into s minus c upon denominator में a b c. If we are stuck after this, what I told you in trigonometry, look at the other side. Other side is the biggest end. Other side में denominator में देखो मुझे क्या चाहिए? s. मेरे पास denominator में s है क्या? नहीं. So I'll multiply and divide with s. So I'll get s into s minus a into s minus b into s minus c upon a b c s. And now if you remember एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? अंडर रूट. तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर करता हूं तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा? गायब. तो दैट मीन्स आई कैन राइट द न्यूमरेटर एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर.
and what is in denominator? It is ABCS, so which is equal to RHS. Hence proved. यही तो चाहिए था. Got it? I hope it is clear now. So let's move on to the last part, which is Napier's analogy. Now Napier's analogy is this. Napier's analogy is basically for tan. खाली tan के लिए, tan और cot. Sin and cos के लिए यूज करते हैं हम लोग नहीं. So first is अगर tan b minus c by 2 is equals to b minus c b plus c cot a by 2. Got it? So हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? What we'll do here? अगर b minus c by 2 मुझे पता है, so we should also know cyclicity. c minus a by 2. तो sin c tan c minus a by 2 क्या होगा? If you notice the pattern, c minus a upon c plus a. ये तो समझ में आ गया. अगर bc इधर है तो इधर a है. So here we have c and a. So what we'll have here? Here we'll have cot b by 2. And similarly the last one. What is the last one? Tan a minus b upon 2 will be equal to what will be here? A minus b upon a plus b into cot c by 2. Simple. What is these three formulae? We have Napier's analogy. Basically, I would not like to recommend all to learn the formulae. Just observe the patterns. And if you observe the pattern, then it will be easier for you to recall कि इसमें कैसा था. Got it? Tan b minus c by 2, b minus c b plus c cot a by 2. एक याद रखा तो बाकी दो तो पैटर्न से मिल जाए. Now what we'll do, we'll move on to some nice questions. So I'll give you 30 seconds to read the question and to map out what we'll do. क्या इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ऐसा. If you can and if you cannot, कुछ तो सोच लेना कैसा करना है. Obviously these questions are based on these three things. And we'll proceed further. आप ना usual कि I'll give you 30 seconds to read the question and understand. Got it? So next is this. It is a good question. Please read it and understand what we can do here. Okay. So हम लोग को what we have to prove here? We have to prove this. This is equal to this is equal to this. Means we have to prove three equalities, right? So let's simplify one of them. Suppose I select this one. अगर तीनों इक्वल है तो तीनों की वैल्यू जो आएगी लास्ट में दैट विल बी सेम. यहाँ पे तीन है तो वी कैन नॉट लाइक डू LHS इक्वल टू RHS. तीन सेट LHS में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. व्हाट विल डू हियर? विल सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज विल हैव द सेम वैल्यू. सपोज इसकी वैल्यू आ गई 2, तो हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करके क्या लाएंगे 2 और इसको भी सिंप्लीफाई करके क्या लाएंगे 2. So if all these three are equal, that means the equality is proved. Got it? So let's simplify this first. Tan a by 2 का फॉर्मूला ही पता है क्या दे क्या? मुझे लगता है मैं भूल गया. नहीं जस्ट किडिंग. यहाँ पे b plus c दिख रहा है ना. See here I am doing an interesting thing which we'll be doing in further questions also. Like I'll be adding and subtracting a. You'll understand. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? एक बार a ऐड किया तो a plus b plus c माइनस ए पहले से था और एक बार a सब्ट्रैक्ट किया. एंड व्हाट इज tan a by 2? tan a by 2 क्या था? s minus b into s minus c upon s into s minus a. So here if you see this a plus b plus c, do you remember a plus b plus c? A plus b plus c is perimeter and perimeter equals to 2s. So this will be 2s minus 2a into under root of s minus b s minus c upon s into s minus a. यहाँ से we can take 2 common. So क्या आएगा 2 into s minus a into under root of
S minus B, S minus C upon S into S minus A. Got it? Now, if you know this, ये तो बहुत ही सिंपल होता है कि x अपॉन रूट x अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो आई गेट रूट x. करेक्ट. सो वही यहाँ पे है, ये s माइनस ए और ये अंडर रूट ऑफ s माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए. सो बेसिकली व्हाट आई गेट इज, यू विल सी अंडर रूट पूरे में ही ले लिया, ये अंडर रूट ऑफ s माइनस ए बचेगा ना, ये कैंसिल होके ऐसा. बराबर. सो इफ आई टेक अंडर रूट इन द होल तो क्या बचेगा, आई विल गेट s माइनस a into s minus b into s minus c upon s. So I got this by simplifying the first one. So similarly second one को भी simplify करके यही मिलना चाहिए. So let us simplify this. मैं second ही करूंगा, third वाला you do it on your own या फिर हम लोग similarly लिख लेंगे. ठीक है. सेकेंड वाले में if you see मेरे पास क्या है, c plus a. So here I added and subtracted a. यहाँ पे will add and subtract b. Correct. So what will write here, a plus b plus c added b minus b subtracted b. Tan b by 2 go, what we can write, we can write s minus a into s minus c upon s into s minus b. Got it? क्लियर है क्या? सो यहाँ पे a plus b plus c we can write it as 2s minus 2b. यहाँ पे सेम अंडर रूट, यहाँ से विल टेक 2 कॉमन अगेन, s minus b सेम अंडर रूट s minus a into s minus c upon s minus b. सिमिलरली ये अंडर रूट कैंसिल होके यहाँ पे रूट आ जाएगा. So finally what we'll get is same thing, 2 under root of s minus a into s minus b into s minus c upon s. This is the same as this. Similarly third वाला try कर लेना and this is hence proved, right? Third वाले में just we need to do plus c and minus c. So it was a good question. The main thing you need to learn in this question is this one, कि ऐसा कुछ दिखा, then we can use or add subtract and get s. Got it? So let's move on to the next question here. Yeah, in triangle ABC prove that. Now these types of question we have done yesterday also. Let me tell you what we did here. हम लोग ने half angle use करके will converted this cos square c by 2. If you remember, it was 1 plus cos c the whole upon 2, and then we used cosine rule. But since here I don't think I need to use that because we already know the formula of cos c by 2. Cos c by 2 क्या था, अंडर रूट ऑफ s into s minus a, गलत बोल रहा हूँ क्या, s into s minus c upon ab. तो उसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज आई स्टार्ट विद LHS. व्हाट विल आई गेट इन LHS? हियर इट रिमेन सेम, a minus b the whole square into cos square c by 2. Cos square c by 2. I am also doing this question first time, so if I make a mistake, don't laugh. Okay, let's do. Cos square c by 2, स्क्वायर रूट तो गायब हो गया, तो क्या मिला, s minus c upon ab, correct, plus a plus b the whole square into. अच्छा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चल आज लेट हो गया संडे को, यू आर स्लीपिंग टिल नाउ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चल a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2. साइन का क्या था, s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन ab. करेक्ट ना? आई होप इट इज करेक्ट.
because S minus B, right na? Righty, I guess. Yeah. So let's start. This was LHS. So if you can see, denominator is AB. So that means AB तो common denominator आ गया. और कुछ है क्या? नहीं ना? There is nothing more we can do. So basically, I guess common तो नहीं आ रहा है. So we need to open the brackets, right? S तो हम लोग को नहीं चाहिए. So I guess this will be कचरा आ जाएगा बहुत. मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ. Let's see. So a minus b the whole square. A plus b the whole square. I guess we should avoid this, right? Because I am thinking ये बहुत ही गंदा हो जाएगा ना. Here if I open this bracket, I'll get s square. और s होता है a plus b plus c by 2. उसका square, a square plus b square. So let's avoid this, I guess. We'll use the normal method अपना. Half angle में convert करने वाला. Right? So here I can write a minus b the whole square. इसको I can write 1 plus cos c the whole upon 2 plus a plus b the whole square. I again got a better method. हम लोग क्या करेंगे पहले, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि मुझे लगा ब्रैकेट ओपन करके ना बहुत कुछ कट हो जाएगा. सो हियर आई कैन राइट a स्क्वायर minus 2ab plus b square into cos square बराबर प्लस, अच्छा ये पूरा लिख लेता हूँ, into cos square c by 2 प्लस यहाँ पे आई कैन गेट a square plus 2ab plus b square into sin square c by 2. Now here if you see, एक के लिए बता रहा हूँ, a square I will take common. So if I take a square common, तो cos square c by 2 multiply होगा. So I'll get cos square c by 2 plus sin square c by 2. Similarly, ये देखो b square. So if I take b square common, एक step खा गया मैं. So under again I will get cos square c by 2 plus sin square c by 2. और यहां से if I take minus 2ab कॉमन, माइनस 2ab कॉमन ले लिया, तो माइनस लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos square c by 2 और माइनस 2ab कॉमन लिया, दिस विल बी माइनस sin square c by 2. I hope it is clear. ये 1 cos square plus sin square 1, ये be 1. So what I'll get is, I'll get simply a square plus b square minus 2ab into cos square minus sin square is cos 2 theta, which is cos c. And if you remember this is the another form of cosine rule. C square को मैं क्या लिख सकता हूँ? I can write c square as cosine rule के हिसाब से a square plus b square minus 2ab cos c, the another form which we discussed, which I said कि we'll एकदम rarely use, but यहाँ पे use हो गया. तो ये क्या है? Basically this is equal to c square, which is equal to RHS. I hope हम लोग ने इससे किया, आगे जाके दिख गया, वो कचरा नहीं करना था. Got it? So this is the proof. Yes, smart thing we did, we take two common and इसका फायदा उठाया, square identity का cos square plus sin square is 1. Okay, now I am happy. चलो next question. Here
Now, same, you will look at the question, map out what to do. This is a very good question, an interesting question. And I'll wait for 30 seconds, then we'll proceed. Now, should we proceed? Chalo. This is the main thing. If you see this, it basically looks like Pythagoras. That means the triangle ABC is a right angle triangle. Hypotenuse ka square means A is hypotenuse is equals to sum of squares of other two sides. So if A is hypotenuse, this will be angle A, this will be angle B, and this will be angle C. This was a very important part. And now, if you look at this, S minus A, S minus B, S minus C. This looks like area of triangle. Area of triangle ABC. मतलब बेसिकली मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू पूछी है. गॉट इट? करेक्ट ना? आई होप इट इज क्लियर. बेसिकली दिस इज एरिया का स्क्वायर. डोंट माइंड ये स्क्वायर. We did this type of question before. Got it? So these two things you need to remember. Baki to now it's very simple question. I hope it is clear. Got it? So let's proceed. मुझे basically area of triangle का square चाहिए. So that means what I need to find? I need to find 4 into area of triangle ABC का square. These small things are very important. And since it is a right angle triangle, I can use area of triangle का square क्या होता है? Half into base. Base is C into height. Height is B का square. So that means 4 into 1 by 4 into C square into B square. 4 and 4 cancel. तो मुझे क्या मिल गया? B square into C square. So my option is A. Correct? It was a very मतलब calculation कुछ नहीं था. It was a smart question. We just have to observe कि हाँ ऐसा था. So this means it is a right angle triangle. और ये it is area of triangle ABC का square. So this means this was a good question again. Not much calculation, but you just need observation. Got it? So let's move on to the next question. Next is this. Yeah. This is also a nice question. Again, please take 30 seconds and try to like look कि हम लोग क्या कर सकते. Done? Done. So let's start. Same यहाँ पे मतलब ये दिया है a plus c is 18 दिया है. I need to find value of b. So if I am given sin a by 2, sin c by 2, sin by 2, think something like this. I have to find side. I am given angles. This is angles. I want to find side. So means I need to convert side to angle. Now अभी तो हम लोग के पास half angle भी है. Now we have half angle. तो half angle भी है. तो then we can use the half angle formula. Correct? तो sin a by 2. Sin a by 2 क्या था? Under root of s minus b into s minus c upon bc into sin c by 2 was under root of s minus a into s minus b upon ab is equals to sin b by 2. What was sin b by 2? S minus a into s minus c upon ac. So here look at this.
the s minus b और b, s माइनस बी और b ये स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर होके स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, एंड द अदर टू टर्म्स s minus c will get cancelled, s minus a will get cancelled, a with a and c with c, तो सब कैंसिल हो गया है. राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? c. लेफ्ट हैंड साइड पे वी गॉट s minus b upon b. आई होप आई एम करेक्ट. इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या बचा? 1. Square root of 1 is 1. So s minus b is equals to b. That means s is equals to 2b. I have converted everything into side. मुझे तो b का वैल्यू चाहिए. So s मुझे पता है. What is s? S is semi perimeter. So I can write a plus b plus c upon 2 is equals to 2b. If I cross multiply, I will get, rearrange भी कर रहा हूँ, a plus c plus b is equals to 4b. a plus c का वैल्यू क्या दिया है? 18. so 18 is equals to b को वो साइड 4b minus b 3b. that means b is equals to 6. है क्या ऑप्शन में? yes, it is option c. I hope it is clear. This very मतलब this was a simple question compared to others. No some thinking and all required. Just like use the half angle formula and s को क्या put कर दो? a plus b plus c upon 2. I hope it is clear. Got it? So let's move on to the next one. Again, you can take your 30 seconds and map out what we can do. Chalo, done. Should I proceed? It is also very simple question. If you see here, हम लोग के पास tan a by 2, tan c by 2 है. We have tan a by 2, tan c by 2. And if you look at the options, option में there are all sides. Means I need to convert tan a by 2, tan c by 2 into sides. तो half angle है, तो क्या will use करेंगे? We'll use the half angle formula. So if you remember, tan का क्या था? I think I forgot. tan का was tan a by 2 का s minus b into s minus c upon s into s minus a. चलो, I guess it is correct, right? Right ये आंसर मैच नहीं हुआ तो बदल देंगे. ओके. tan c by 2 क्या था? tan c by 2 was s minus a into s minus b upon s into s minus c. Got it? So here the terms which are squared, right? s minus b x square हो जाएगा और रूट के बाहर आ जाएगा. s x square हो जाएगा और रूट के बाहर आ जाएगा. oh, and we can cancel out these terms ना. s minus c gone, s minus a खत्म. So what we are left with is, we are left with 1 minus, it तो square होके highlighted blue part बाहर आ गए, तो s minus b upon s. So if I take LCM now, LCM लेके क्या मिलेगा? s minus b upon s. So ऊपर से तो क्या आ जाएगा? b upon s. अभी s नहीं चाहिए, s क्या लिख सकते हैं हम लोग? a, s कहता है ऊपर was b, तो b upon a plus b plus c upon 2. This 2 will go up and I will get 2b upon a plus b plus c. तो है क्या ऑप्शन में? It is option B, correct. 2b upon a plus b plus c. Got it? Now I am very thirsty, so until you look at the next question, I'll go and drink some water. It is a very good question again. चलो इसके लिए I'll give you 40 seconds, बस, not 30 seconds. I'll drink some water and come. Wait.
Chalo. I hope you thought something. Now, here it is a very interesting thing to notice this. What to notice, right? Let me tell you a hint देता हूँ. अभी तक we have not used the Napier's analogy. Got it? So obviously, why are we gonna use Napier's analogy? Because here, as you can see, B minus C, angle B minus C आया. And in Napier's analogy, we have these types of angles only. कैसे? A minus B, B minus C, and third wala was C minus A. So if you remember such Napier's analogy, and in Napier's analogy, we have these types of angles. So if somewhere I see A minus B, B minus C, C minus A, basically I used to click और मुझे सोचना चाहिए कि हाँ मैं Napier's analogy use कर सकता हूँ. अभी 100% use करना है कि नहीं करना है, that depends on the question. But here, since we saw B minus C, let's use Napier's analogy. So, B minus C का Napier analogy, do you remember? It was tan B minus C by 2 is equals to B minus C upon B plus C, right? B minus C upon B plus C into cot A by 2. Now, if you see, it is a very simple question. Why? Because A find करना है, means I have to find this. B, C पता है, means I know this. B minus C पता है, means I know this. तो सब पता है, मुझे खाली cot A by 2 नहीं पता है. So I mean to find cot A by 2 का value. If I get cot A by 2 का value, I'll get A का value. So this is a very good question. खाली click करना is important कि we have to use Napier's analogy. B minus C is pi by 2. So B minus C by 2 will be pi by 4. Pi by 4 means 45. So we'll get 10 pi by 4 is equals to B minus C. So root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 into cot A by 2. 10 45 is 1. So that means I can write 1 is equals to root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 into cot A by 2. cot तो वैसे भी कम पसंद है ना, हम लोगों को क्या पसंद है? tan. तो cot को मैं वो साइड लेके जाऊंगा. So I'll get tan A by 2 is equals to root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. Now comes the important part. See carefully. अभी if I want to find angle A, right? मुझे basically इसका value पता होना चाहिए. I need to find the value of this. Now, if you remember, trigonometry में we generally, apart from standard angles like 30, 45, 60, 90, these values we know by heart. But after some time, we also know some other standard angles. जैसे 15 degree, 15 degree we know, 75 degree we know. These are other two angles whose values we should know. Like it may come in some of the questions, and if it's JEE mains, then it may definitely come. So root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 is basically tan 15 degree, and tan 15 degree is given by tan pi by 12. 2 minute का काम है, we'll see कि tan pi by 12 क्या है. 15 degree को I can write 45 degree minus 30 degree या फिर 60 minus 45. So I'll write 60 minus 45. So what is tan A minus B? Tan A minus B क्या होता है? Tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. So what is tan 60 degree? It is root 3 minus 1 upon 1 plus root 3, which is the same as this. So that means
बेसिकली मुझे क्या मिला, हाँ, आई गॉट tan a by 2 is equals to tan pi by 12. So that means a by 2 is equals to pi by 12. It 2 and 2 cancel 6. So that means a is equals to pi by 6. है क्या pi by 6? Yes, it is option D. I hope you got it. This was an important part, but I hope कि you should know this part. What this part? कि हाँ, इसका pi by 3. 1 second. Yeah. This is value of tan 15 degree. 15 degrees pi by 12. I hope it is clear. It was a good question. First thing we need to do is click करना कि we need to use Napier's analogy. Second is we should know the value of this. Got it? क्योंकि ऑप्शन से सेटिस्फाई करा नहीं सकते ना. अच्छा, if we check the options, pi by 2, अगर a pi by 2 होता तो a by 2 pi by 4 होता, तो 1 तो नहीं है ये. pi by 3 होता 60, तो a by 2 will be pi by 6 30. ये 30 डिग्री भी नहीं है, so a भी तो ऐसे ही will eliminated. हाँ, good, we can try options also ना. But c pi by 8 था, which means 45. So a by 2 will be 22.5. So we'll be confused with two options, or we'll be left with two options, option C and option D. But फिर भी ये तो पता ही होना चाहिए था, वरना option C option D नहीं मैच होता. Good, good, good. Option will also said that way ना कि सब option eliminate नहीं हो जाएंगे. Okay, fine. Now let's move on to next. Again, please take some time, 30 seconds. वापिस last question के लिए 40 था, इसके लिए you will get 30. Done? Okay, let's start. So कोसेक ऐसे ही नहीं पसंद है, साइन में बदल दो. एंड दिस cos c minus a by 2. What will do about cos c minus a by 2? Now, see, I can write cos c minus a by 2 upon sin b by 2. Right? C minus a by 2. This pattern looks similar Napier's analogy में. Tan में भी था a minus b, b minus c, c minus a by 2. But problem is we here have cos. We have cos. We don't have tan. If we should have tan, or if we would have tan, then we would have easily used the Napier's analogy. And also you can see in the options, option में only we require sides. Means we need to get rid of the angles, means I need to convert angles to sides. अभी cos में if you think carefully for cos में there is no formula, half angle or anything which have c minus a by 2. तो cos का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. So one of the choice is here you can say cos c by 2 minus a by 2. Like I can write it as cos c by 2 minus a by 2. So cos a minus b का formula cos a cos b plus sin a sin b, and then for everything you use half angle. एंड सब हाफ एंगल रूट में आएंगे. इफ यू कैन इमेजिन सब रूट में आएंगे, बहुत सारा कचरा हो जाएगा और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बट आंसर तो आएगा, ऑब्वियसली आंसर तो आएगा, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो व्हाट वी डिड हियर, सी आई विल डू एन इंटरेस्टिंग थिंग. आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin c plus a by 2. So 2 sin c plus a by 2 से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, एंड 2 sin c plus a by 2 डिनोमिनेटर, और बाकी के दो सेम रहे, which is cos c minus a by 2 and this is sin b by 2. Got it? I multiplied and divided this. Now numerator में क्या बन गया देखो. What I got in numerator?
Numerator में I got 2 sin cos. 2 sin cos by defactorization, I can write sin प्लस साइन. पहले में एंगल ऐड हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में तो 2 ही है, ऐड होके c प्लस a प्लस c माइनस a. 2 साइन प्लस साइन, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सो c प्लस a माइनस c प्लस a. डिनोमिनेटर में वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, here you can see we are in a triangle, so I'll just write it here. We are in a triangle, so a plus b plus c is equals to pi. So c plus a by 2 will be equal to pi by 2 minus b by 2. Got it? So that means denominator में I'll get 2 sin pi by 2 minus b by 2. We have done this. लास्ट वीक हम लोग ने यही किया था ना, ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 चालू था तभी. इनटू साइन b by 2. नाउ न्यूमरेटर में a कैंसल, c कैंसल, c प्लस c 2c और ये 2 कैंसल. तो बेसिकली आई गॉट साइन c प्लस साइन a अपॉन, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग व्हाट allied angles. By using allied angles, I can write this as cos b by 2 into sin b by 2. Now, if you see denominator, it is sin 2 theta का formula. It is sin 2 theta का formula. So, what is sin 2 theta का formula? 2 sin theta cos theta. That means ऊपर I got sin c plus sin a अपॉन नीचे इट इज साइन b. नाउ इट इज वेरी सिंपल, हम लोग के पास एंगल्स है, ऑप्शन में मुझे साइड्स चाहिए, तो एंगल टू साइड विच विल यूज साइन रूल. तो साइन c को आई कैन राइट k इंटू सी प्लस k इंटू a अपॉन k इंटू b. ऊपर से k कॉमन आके डिनोमिनेटर से कैंसल, सो आई गेट c प्लस a बाय b. इट वाज अ गुड क्वेश्चन. c प्लस a बाय b है क्या ऑप्शन में? c प्लस a, हाँ, ऑप्शन b. आई होप इट इज क्लियर नाउ. ऑप्शन b. गॉट इट? या, ऑप्शन b. It was a nice question. This was like, if you want to do the lengthy way, you can try it at home. What you can do, कि जो मैं बोल रहा था, कंपाउंड एंगल यूज करके you can use हाफ एंगल, बट यहाँ पे हम लोग वैसा नहीं. Got it? Next question is here. Yeah, take your 30 seconds. It is like simple question. Okay, done. Let's see what we can do here. Here, how many triangles are possible? And given information is side B, side C, or sine B दिया है. So in such cases, how many triangles are possible? Let me tell you. ट्राइंगल कभी बनता है, मींस ट्राइंगल तो कभी बन जाता है जब भी ABC एंगल होता है एंड ABC साइड होती है. सो in such types of question, how many triangles are possible and so on. Yeah, if a triangle is possible or not, can triangle ABC be formed or not. So in such types of question, we basically use the range of sine and cos. Sine and cos के लिए we both know कि कौन सा भी एंगल हो, it always lies between -1 sine हो या तो cos हो to 1. It always lies between -1 to 1. So if sine lies between -1 to 1, so what we'll do here, हम लोग को sine भी पता है, we'll try to find sine A and sine C, या फिर cos A cos B कौन सा भी यूज कर सकते हो,
but we just need to find the three angles का sine निकालो या three angles का cos निकालो. What I'm trying to say is sin A, sin B, sin C तीनों का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, या फिर cos A, cos B, cos C तीनों का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए. बस या तो sin A, sin B, sin C निकालो या cos A, cos B, cos C. Now please look, दोनों में से कोई भी एक निकाल सकता हूं मैं. अगर if sin A, sin B, sin C are between -1 to 1, that means the triangle is possible. And if sin A, sin B, sin C or any one of them is not between -1 to 1, that means triangle is not possible, because sine का value should be between -1 to 1. Got it? So that means now I have to find what values? I have to find the values of sin A and sin C. हमारे पास है ना sin rule. Sin rule is what? A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C. Now whoever values we know, we put it. A का वैल्यू पता है नहीं, तो A upon sin A तो वैसे ही रहेगा. B का वैल्यू पता है, yes it is 5. Sin B is 3/4. C का वैल्यू 7 upon sin C. So यहाँ से I'll get sin C. So if I look at this two, ये दोनों क्या देंगे? 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 5 4s are 20/3 is equals to 7 upon sin C. So that means cross multiply करके sin C का वैल्यू I get 7 3s are 21 upon 20. Oh, 21 upon 20. Numerator is greater than denominator. That means this is greater than 1. And since sin C is greater than 1, implies it is never possible. That means 0 triangle ABC are there. मतलब ऐसा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है जहां पे B का लेंथ 5 हो, C का लेंथ 7 हो और sin B की वैल्यू 3/4 हो. Because sin C की वैल्यू क्या है? Greater than 4. So 0 triangles means I guess it is option A. Got it? So I guess this is all for today. You can look at the questions again and we'll end the session here. So we have completed the whole trigonometry, I guess, right? Phase 1 हो गया, phase 2 हो गया. Phase 1 was trigonometric ratios, phase 2 was trigonometric equations. Last week में Saturday Sunday ये दोनों हो गए. Phase 3 was solution of triangles, which we did in these 2 days, this Saturday and Sunday. And inverse trigonometry which was phase 4, वो तो हम लोग का पहले functions के साथ हो गया था. Got it ना? I hope it is clear. So now next we'll basically mostly do heights and distances. So that's all from my side for today. Have a great Sunday. तुम लोग को तो अच्छा है. You have the vacation ना Pune region को. So I guess you don't have the AI83 this time, like this Saturday Sunday. You have next week, right? Enjoy your Ganesh Chaturthi vacations. And till then, bye bye. We'll meet next time. Bye bye. Take care, everyone.